औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को? तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? मेरे को वो पॉलिटिशियन को कौन इलेक्ट करके पॉलिटिशियन बनाते हैं? हम इलेक्ट करते हैं, हम इलेक्शन करते हैं। करने बैठी थी क्या जो तूने देखा? जबान में काबू रख अपनी। आप बिना अंदर कर दो, एक जो समझदार वो रुक जाओ। तुमने मेरे इमेज के बारे में जो बोला ना, तुमने मेरे इमेज में क्या बोला? तुमने मेरे इमेज के बारे में क्या क्या बोला ना, वो सब देखेंगे। There has been lots of incidents in the past, and this is a pattern, that is happening. Of a lot of the people around us have not changed. Solid response to all this discrimination that we face on an everyday basis. Even if you take an auto, the moment it is us, the rates will not be the same. Nobody should be discriminated on the basis of how we look, what we eat, and how we dress. नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और उस वाक्य की आज हम बात कर रहे हैं जिसने पूरे देश को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है, जिसने एक बार फिर से हाईलाइट कर दिया है कि आखिर भारतीयों के अंदर रेसिज्म कितना प्रेवलेंट है, कितने नस्लीय हमले एक भारतीय दूसरे भारतीय पर कर पाते हैं, करते हैं, और खास करके जब ये हमारे नागरिक पूर्वोत्तर क्षेत्र से हों। पूर्वोत्तर क्षेत्र के ही अरुणाचल प्रदेश की 3 लड़कियों के साथ दिल्ली के मालवीय नगर में जो कुछ हुआ, वो वाकया वीडियो में कैप्चर किया गया और वो वीडियो वायरल है। पूरा मामला शुरू होता है क्योंकि ये लड़कियां अपने घर में एयर कंडीशनर का रिपेयर वर्क करवा रही थी। उसमें से कुछ धूल जो है वो जाकर नीचे फ्लोर वाले लोगों के मकान पर शायद उससे कुछ परेशानी हो रही थी, और अचानक से आप देखते हैं कि जो मियाँ बीवी है वो आकर इन लड़कियों पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ऊल जुलूल बातें करते हैं, भद्दे टिप्पणियां करते हैं, आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि भाई आप लोग तो स्पा वर्कर्स हो, सेक्सुअल एक्टिविटी चल रहा है, और इतनी घिनौनी बातें करती हैं जिनको बोलने का दिल भी नहीं कर रहा है मुझे। ये लड़कियां बहादुर थी, इन्होंने वीडियो क्लिप बनाया, पुलिस में मामला दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन ये एक अकेला ऐसा मामला नहीं है, ऐसे मामले हर रोज देखने को मिलते हैं। वो चक दे इंडिया में आप फिल्म में देखते हैं कि आकर वो जो हॉकी प्लेयर लड़कियां हैं वो आकर इस बाबत अपनी बातों को सामने रखती हैं अपने कोच के सामने, या रियल लाइफ तो छोड़ दीजिए आप, जो रियल लाइफ में तो हर रोज की ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। तो निंग्रेचॉन मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रही हैं, जो कि नागा पीपल मूवमेंट्स फॉर ह्यूमन राइट्स के साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और निंग्रेचॉन से सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये जो पूरा का पूरा वाकया हुआ है मालवीय नगर में, उसे लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? Thank you, Smita. I speak both in English and Hindi in between. Okay, is that okay? Yeah. जरूर। Yeah, what जरूर। has happened in Malviya Nagar is nothing new for people from the Northeast region. There has been lots of incidents in the past, and this is a pattern, that is happening over the years. And even if there are now more protection for the people in the region, the mindset of a lot of the people around us have not changed. So this is very unfortunate. And I was also thinking of how the 3 girls managed to be so bold. And I think it's because they were together. They found boldness. Otherwise, it is almost an everyday affair. Someone or the other from the Northeast is being called a name, is being given a label, even to the extent, what we eat, what we wear is becoming an insult for the others. So this is not an isolated case, but this has been happening time and again, and it is unfortunate that we still have not. There is still no, solid response to all this discrimination that we face on an everyday basis. Yes, Smita. एब्सोल्युटली। मतलब आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप मोमो कहना चाहते हैं, चाउमीन कहना चाहते हैं, आधे लोगों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं मानो कि वो
भारतीय ही नहीं है, अरे वो दे आर इक्वल सिटीजन्स, हमारे आपके जैसे ही सिटीजन्स हैं, हमारे देश के सिटीजन्स हैं। कुछ तो ऐसे पागल लोग हैं जो अखंड भारत के सपने संजोते हैं कि पीओके लेकर आ जाएंगे, अफगानिस्तान लेकर आ जाएंगे। जो लोग आपके पास हैं उनकी तो इज्जत कीजिए, जो नागरिक हमारे हैं उनको तो अपना बनाकर रखिए। निंग्रेचन, आप आज दिल्ली में ही रहती हैं, कितना वक्त हो गया आपको दिल्ली में रहते हुए? It's been now about 20 years. I studied here, then I have now 3 kids, and yeah, it's been about 20 years now. Yes. But Smita, आपकी one of अपनी the पर्सनल जर्नी कैसी रही थी इन 20 सालों में? आपने खुद ऐसे वाकये आपने फेस किए हैं? yes. Even now, on an everyday basis, sometimes when you go to the market or when you go to some places, it will be the way they look at you, the way they will even even if you take an auto, the moment it is us, the rates will not be the same. So these are the everyday struggle, everyday stories of a lot of our boys and girls who cannot speak proper Hindi, for example, who cannot communicate well. It is a hindrance and an obstacle every day. And Smita, I think one of the important points that we must understand and rectify is just because the way we put it, it is racism, whether it is from the northeast or anyone. I think it should not be, we should not say that because we're Indian citizens, we should have, we should not face racism. Be it anyone, Absolutely. be it, yes. I Absolutely. think it's something that even, in the media, we should be very careful of how we articulate. Just because Hmm. you're different, you should not be discriminated. I think this is for anyone, not only people from the northeast. Let it be people from Nepal, let it be from Bhutan, wherever you are from. Nobody should be discriminated on the basis of how we look, what we eat, and how we dress. I think this should be the एब्सोल्युटली foundation. इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये बिल्कुल, ये कतई ये कहने का मतलब नहीं है कि अरे हमारे सिटीजन है तो इनके खिलाफ नस्लभेदी कमेंट्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाहर के सिटीजन अगर आ रहे हैं, कोई साउथ ईस्ट एशिया से आ रहा है, कोई कोरिया से आ रहा है, जापान से आ रहा है, जो अलग दिख Yes, सकते हैं, जिनकी बोलचाल अलग हो सकती है, जिनके परिधान अलग हो सकते हैं, लेकिन आप right. उनकी क्योंकि उनकी एक अलग कल्चर है, एक अलग संस्कृति, एक अलग भाषा है, इसलिए आप उन पर रेसिस्ट अटैक करेंगे। इंडियंस को सोचने की जरूरत है कि आप जब किसी दूसरे मुल्क में जाकर काम करते हैं, जब इंडियंस पर रेसिस्ट अटैक होता है, तो हम कहते हैं ना कि पूरे देश पर हमारा चोट है। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हर शख्स को हम इंसानियत की नजर से देखें, हम ह्यूमैनिटी की नजर से देखें और किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना करें। निंग्रेचो, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म्स वगैरह बनाए गए हैं ओवर द इयर्स, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स का मैं देखती हूँ बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, कॉलेजेस में हैं, आई एम अज्यूमिंग कि वर्किंग वुमेन की शायद एसोसिएशंस होंगी। फिर भी अगर ये मामले इतने होते रहते हैं हर बार, उसके पीछे आप वजह क्या देखती हैं? Smita, one of the reasons that I see is that the responsibility and the honor is on the Northeast people. The awareness, legal awareness, whatever the interface, it is left for the Northeast people to grapple with. But how about sensitizing the people, the people here, the local people in Delhi, for example, the landlords, those who are your everyday vegetable vendors or the shopkeepers? How do we sensitize them? How do we make them understand? So one of the reasons I think this is something that we can rectify is not to give the responsibility to the Northeast people alone, but it should be also, the sensitization should also be to the locals. And I think this is where the bonding can grow and it can build. Amongst us, we are, as community, we are doing a lot of things of how to even conduct ourselves, among us, as a church, as a community, as a society. We talk even among ourselves, hey, we are living in the city, and city is not, like back home. So we will have to be, much more cautious about how we are.
So among our people, we are doing all those um, uh, uh, conversations, but I don't think it is happening at the other side, the other side of racism that we are talking about. So So, yes, so you said ki you face it almost on a daily basis. That even the auto rickshaw wala actually change fares the moment they see it's somebody not from northern yes, India but from northeastern India. What are some of the worst, some moments when you've really felt very depressed, very angry, worried about your own family or children, or what kind of India are they growing up in? I think I mean I just want to go back to the time when there was lockdown during the COVID days. Um, it's like the moment you step out of the house, the immediate connection that they would make, you know, with this face and Wuhan, and the discrimination after that. Yes, so that's one thing that that keeps coming back to my mind, and I'm like, what is it about people here in India that cannot appreciate or do not, understand people beyond how they look? And this is something that hurt me a lot. And I used to even tell my husband, be careful when you go to the market to buy, the daily groceries. You might get beaten up because there was this fear. And around that time, there was also so much fear around the COVID, around COVID itself, that we had double fear of how people are reacting. And I think we had lots of stories that came out during that time. What happened in Hyderabad and few other places, right? So yeah, these are the things that hurt us. And sometimes, Smita, it may not be, You want to get some it water, is not, please? yeah, no, it's all right. It did not be physical like how we saw or it did not be so loud how we saw in Malviya Nagar. It might not be violent, yet it can be very, very discriminatory. You know, when you enter a shop also, um, small things, but you are always the last one. Even if you came before, the people, the others, you will be the last one. This is like very common, and now it's like we are internalizing it as somebody who has stayed in Delhi for so long. It's like I'm slowly beginning to accept that it's okay. But when I think of the young boys and girls, I feel sad. I feel sorry. Um, and I think this is not only how it's how people behave towards us, but if you look at what is happening in Delhi, Smita, the places where a lot of our Northeast boys and girls stay, if you have the time, you should explore. You should explore places like Munirka, places like Humayunpur, um, Nagar, what is happening in all those places. You will see how the discrimination happens in rented houses where you will have the electricity bill, which is not the government rate, and we have no way to address this. Okay, then you will have students who will have to buy gas cylinders at black rates, exorbitant rates, because the only way to buy is through the black market. Okay, so small things like this, everyday living is such a struggle in the city, and because it is so common that we don't talk about it. But when we look at it, this is what is happening to all our boys and girls. So they will work hard, they will earn, and whatever they earn will be paid as house rent, and then their daily expenses. So if you go to places like again Humayunpur, you even look at how expensive the vegetables are. Okay, what you get in other markets is much cheaper. When we go to the next market, it will be cheaper because they know that these boys and girls will have no option but to buy from there. So there are so many levels of racism that is operating, and people might say, no, that it's too much, but I tell you, and this has been happening for years. So the electricity bill, it will be like some 8 rupees for a unit, huh? In places like Humayunpur. So the boys and girls are paying double of what they should be paying.
and some would be made to pay, water bill. Um, so many things, so many things. So we're talking about layer of discrimination, and not just because of what we um, encounter, but what we are living with also. I think this is something मतलब very deep. बहुत बहुत जरूरी और सब बातें आपने की हैं जो बहुत सोचने को मजबूर कर देता है कि देखिए एक तो वो नस्लभेदी हमले हैं जो बिल्कुल इन योर फेस हैं, जैसा मालविया नगर में हुआ, और इन लड़कियों ने बड़ी बहादुरी के साथ रिकॉर्ड किया। चौंकाने वाली बात यह है कि वो औरत जो हस्बैंड एंड वाइफ इतनी बेहुदे बातें कर रहे हैं इन लड़कियों को। क्यों? क्योंकि एयर कंडीशनर का रिपेयर चल रहा था, कुछ धूल गिर गया, और ये लड़ाई के बाद इस हद तक तब्दील होगी कि एक औरत खुद कहती है कि भैया तुम आकर बेडरूम में चेक कर लो मेरे पति का एज कितना है। मतलब इतनी गंदी बातें, इतनी अभद्र टिप्पणियां करना किसी पर, उन लड़कियों को कहना कि आप स्पा पार्लर ऑपरेट कर रहे हो, मसाज पार्लर ऑपरेट कर रहे हो। पहला तो देखिए जो मसाज पार्लर ऑपरेट करता है उस इंसान को भी आप हीनता की नजरों से नहीं देख सकते हैं। वो इंसान अपनी मेहनत की कमाई करके पैसे कमा रहा है। ये जो हीनतावादी दृष्टि से हर किसी को देखने की आदत हो गई है, मानसिकता हो गई है हमारे समाज में, इस देश में, कि कोई अलग है तो उसको गाली दे दो, मॉब में चलो आपको ताकत मिल जाएगी, असॉल्ट कर दो। ये पत्नी जो कहती है कि पति जो है मेरे वो कस्टम्स के हैं, उनका बाप राजनीतिज्ञ हैं, ये जो वीआईपी कल्चर है, माइंडसेट है कि पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी। इतनी कुछ प्रॉब्लमैटिक चल रही हैं। एंजल, एक युवा लड़के को जिस तरीके से पीट कर मार दिया गया उत्तराखंड में, हमने देखा, उसकी डेथ को लेकर भी प्रोटेस्ट वगैरह हुए, लेकिन कुछ बदलता नहीं है। तो इसमें जो निंग्रेचॉन बहुत जरूरी बातें कह रही हैं कि जब आप देखते हैं कि एक पूर्वोत्तर से कोई बच्चा आया है घर किराया लेने के लिए, पहला तो दिल्ली के अच्छे इलाकों में शायद घर देंगे नहीं, जैसा कश्मीरी मुस्लिम्स को नहीं देते हैं, आम मुसलमानों को नहीं देते हैं। घर देंगे तो किराए ज्यादा बढ़ा देंगे, उस एरिया के मीटर बिन्स के जो है वो कीमतें ज्यादा हो जाएंगी, सब्जियों की कीमत ज्यादा हो जाएंगे। तो हर लेवल पर जो है रेसिज्म ऑपरेट कर रहा है, और ये वो चीज है जो देश को शर्मसार करती है। ये कह देना कि भाई आपने कहीं प्रोटेस्ट कर दिया तो देश इंसल्ट हो रहा है, नहीं। ये हर रोज की जो लिव्ड रियलिटी है हमारे फेलो सिटीजन्स की, और जो दूसरे लोग भी आ रहे हैं, हम देखते हैं जापानीज, साउथ कोरिया, सारे ब्लॉगर्स आते हैं भारत में और वो कंप्लेन करते हैं कि कितनी उनके साथ में दुर्व्यवहार की गई है। तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या करे आखिर, जो क्योंकि देयर इज एन ऑडियंस जो हमारी सेंसिटिव है, जो लोगों को रिस्पेक्ट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो बार बार ओवरपावर कर जाते हैं। निंग्रेचॉन, आपको फ्रस्ट्रेशन होता है कि क्यों दिल्ली में रह रहे हैं, हम वापस नॉर्थ ईस्ट ही जाकर रह लें, मेनलैंड में हम क्यों आ रहे हैं? मतलब हाउ डू यू डील विद इट, वेयर डू यू फाइंड द स्ट्रेंथ टू डील विद दिस? Yeah, thank you, Smita, for that understanding. Yeah, it's sometimes it's not a choice, for the boys and girls to choose Delhi. You don't have a choice. If you look at what's happening back home, I'm from Ukhrul in Manipur. Right now, there is some violence happening. We know what happened a few years ago in Manipur, and you will always have something or the other happening in the region, because that is how the country is looking at Northeast. There is unrest, but there is no political commitment to really address what is happening there. So a lot of the youth are being pushed to cities like Mumbai, Delhi, and Delhi because rightly so, because of all the facilities that we have, be it education, be it employment. So Delhi is a place where our boys and girls come to. So it's not about choice, and we are taught we have to cope. And we find solace in being together. That's why we have lots of this community, be it the church, be it the student union, where we, come together and address even issues that affects us personally. Yes, but things are also changing. I will not dismiss that, it has not changed. Things are changing. There was a time when we would protest in front of the police station just to register an FIR. There was a time. Malviya Nagar police station, I think for 3 nights or so, we were there protesting and saying
accept this FIR. This was of one of our women that happened in Munirka, and the police was refusing. One was in Chirag, Delhi, and the police was refusing to register an FIR. So there was a time when we had to even struggle in a police station. I remember in Sarojini police station, how we had to organize a protest. So meaning to say that things are changing. Now we have a special police unit for the Northeast region, Punar. They are doing really a good job in trying to reach out to a lot of our young people. But as I said in the beginning, the responsibility and the honest should not be on the Northeast alone. I feel Yes. sorry for the couple, actually, the Malviya Nagar incident. I feel sorry for the kind of words they were using, the kind of insult and the assault. I mean, I feel sorry for them. And I'm like, what is wrong? I mean, where is our education? What happened to this couple who did not know even how to, register? Sure, maybe they got disturbed, but they didn't know how to register that, please do not disturb or please watch out, whatever it is. But they had to choose to be so violent. And even for the girls, I'm thankful to the girls who were brave enough to say, look, this is not who we are and this is not what we are. Right. Yes, and I think that itself is one of the stories of victory for us in so many sense. But my concern is what will happen. What will happen now? The couple also have appointed a lawyer to defend their case. The story is turning into a victimhood story. Now the husband is saying mentally disturbed and so on and Yeah, so forth. the easy option of trying to Yeah. escape responsibility for your actions. But Ningreichon, many thank you आपके अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए, and also to put into perspective कि everyday की ये constant जो आप लोगों की चुनौतियां हैं, lived realities हैं, which is a telling commentary कि हम ऐसा एक समाज के तौर पर हम क्यों खुद को एक प्रोग्रेस समाज नहीं कह सकते हैं, और जो भी राइट थिंकिंग इंडियन है हमें शर्मसार होने की जरूरत है. पॉलिटिकल रिएक्शन जरूर आई हैं. मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड सांगमा ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में भी एक वाकया हुआ है जहां नागालैंड के साथ एक डॉक्टर के साथ रेशियल अब्यूज और सेक्सुअल अब्यूज का मामला आया है एम्स में, उन्होंने खंडन किया है. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी खंडन किया है. लेकिन ये महज खंडन करने से नहीं होगा. समाज में हर नागरिक के लेवल पर हमें अपनी सोच को बदलना होगा. बहुत शुक्रिया आपका निंग्रेचॉन हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू स्मिता. हमारे समाज को कैसे बदलें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है. बड़ी बड़ी बातें हम चाहे जितनी भी कर ले कि हम एक बहुत पुराने सिविलाइजेशन है, हमारी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, लेकिन हर दिन कभी अपने नागरिकों के खिलाफ, कभी विदेशी नागरिकों के खिलाफ जो जहर यहाँ पर हम उगलते रहते हैं. और हम मतलब नहीं, मैं नहीं उगलती, लेकिन हम उसी समाज का हिस्सा है जहां पर ये तमाम लोग मौजूद हैं. इन लोगों को अगर आप भी जानते हैं, पहचानते हैं, नेम देम, शेम देम, इनको बोलिए कि जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और उसकी एक कीमत भी चुकानी चाहिए. तो ये कोशिश थी समझने की, लिव्ड रियलिटी एवरीडे, जो हमारे भाई बहन हैं, दोस्त हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, जिनके बारे में ज्यादा बात कभी होती नहीं है मुख्यधारा की मीडिया में. तो आप भी सोचिएगा जरूर कि आखिर कैसा देश हम बन रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं. फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया. नमस्कार, आदाब.